let us talk about the fuel temperature. Okay, so in the fuel temperature we are going to discuss about the temperature inside the fuel, how it affects the plant growth, where the temperature generate in the fuel, if there is a high temperature how we can manage, if there is a low temperature how we can manage. Okay, how we can measure the temperature of the soil. These are the questions which we are following from this discussion. Okay, so let us start the soil temperature. Now when we look back to the field, okay, where the crops are grown. So here when there is a solid minerals, solid structures are there, okay, like this one. So this structure, the temperature is with this one. ठीक है, ये जो सॉलिड है यहाँ पे इन्हीं का टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द सॉइल, दिस इज द सॉइल टेम्परेचर. नाउ क्वेश्चन कम्स दैट वेयर फ्रॉम दिस टेम्परेचर कम टू द सॉइल पार्टिकल एंड द सॉइल मिनरल. वी नो दैट दिस पार्टिकल्स इज आर द मिनरल आर द ऑर्गेनिक कार्बन. सॉलिड तो वही होंगे ना. Sometimes the water is also having, so water can also regulate the temperature of the soil. So when we look towards the sources, okay, the first is a sources of the soil temperature. The commonly observed or the main source is a sun. पहला कौन सा है? sun. So the sun is there. Okay, this sun is a prime source. Okay, sun is a prime source of a solar radiation which hit this one. ठीक है, यहाँ पे before I will start this one, I will first clear about the soil temperature concept. ठीक है, तो soil temperature, first let us define the soil temperature. So when we talk about the temperature, temperature is nothing but it is a measure of the heat energy, of the heat energy. Okay, and this heat energy इसका यूनिट क्या है? यूनिट इज ए कैलोरी, कैलोरी आर द जूल इज ए हीट एनर्जी का क्या है? Unit है. While when we talk about the temperature, this I am giving the temperature about. Okay, what is temperature? It is a measure of the heat energy. Temperature is having the unit. The unit क्या होता है इसके? The degree Celsius is there, Kelvin is there, degree Fahrenheit is there. Celsius, Kelvin, Fahrenheit are the different are there. So as usual in the meteorology you deal about the temperature, so those parameters are there. Only some area are there. Let us talk about this calorie. Okay, so what do you mean by the calorie? These are the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram water by 1 degree centigrade. This is called the calorie. एक ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए कितना एनर्जी जरूरत पड़ता है वो क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड द कैलोरी. क्लियर है? Now let us talk about the sources of the soil temperature. So biggest soil is the sun. From here we get the solar radiation, and the solar radiation is the main source of the sun. ठीक है? So in the meteorology we used to read about the solar radiation, that is the heat, and we know very well in the solar radiation, infrared, microwave, these are the, ये क्या है? infrared, microwave, these are the longer wavelength radiation.
दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट, ये हीट के लिए होते हैं। आप जानते हो सोलर रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, सो आफ्टर द गामा रे वगैरह 300 to 400 700 तक क्या आता है विजिबल रेंज, एंड बियॉन्ड दैट 1700 नैनोमीटर के बाद में जो भी आता है इंफ्रारेड, देन द माइक्रोवेव गोस फार अवे, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिएशन। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट द अदर सोर्स, दैट इज अबाउट द माइक्रोबियल एक्टिविटी। माइक्रोबियल एक्टिविटीज लाइक decomposition. So in this process they release the energy. कई सारे ऐसे माइक्रोबियल एक्टिविटी होते हैं जहां से क्या होता है, बिकॉज बेटर से लेट अस टॉक वन ऑफ द माइक्रोबियल एक्टिविटी इज ए माइक्रोबियल रेस्पिरेशन। ओके, माइक्रोबियल रेस्पिरेशन इज ए इंपॉर्टेंट वन। सो वी नो दैट इन द रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। So this energy is also important, this energy, and later it converted into a temperature. Okay, third source for the is a fertilizer. Okay, fertilizer or addition of the fertilizer can be the source of this heat energy, fuel temperature. इसके अतिरिक्त कई बार आपका इरिगेशन है, वो भी इस तरह का होता है। इरिगेशन or the natural rain is responsible for the rain. Rain कब होता है, in the winter season when there is a rain, this increase the temperature of soil. Are you getting my point? There is a organic matter decomposition is also responsible, and mulching is also responsible. Mulching increase